So in this video we will solve the remaining two parts of question number 1 exercise 1.3. Now we have to find whether 2 upon 11 is of terminating type or of non-terminating type. So what we will do, we will perform division, okay, long division. We will divide 2 by 11. Now we can see that हम यहाँ पे देख सकते हैं since 2 is less than 11, so here we will put a decimal over here and it will become what, 20. So you can put 0 point, है ना, before decimal you can put 0. So 11 2s are 22, so it will be greater. So 11 1s are 11, so we have multiplied 11 by 1, so we are getting what, 11 1s are what, 11. So you are getting what, you are getting here as what, 9. Is that clear? अब हमें यहाँ पे जब 9 मिलता है, देन सिंस वी हैव पुट डेसिमल, हम डेसिमल यहाँ पे लगा चुके हैं, सो वी कैन पुट 1 0 ओवर हेयर. ओके, सो नाउ नेक्स्ट 11 8s are 88, 11 8s are what, 88, सो 2 will be left, 2 बचेगा. ओके, नाउ अगेन 2 is less than 11, so we can put 0 sign over here. 0 over here, we can put 0 over here. Okay, so 11 1s are again what, 11 1s are what, 11, so 9 will be left. जो 9 है रिमाइंडर वो आपका बचेगा. ओके, नेक्स्ट अगेन वी विल पुट 0. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट, 11 8s are again what, 88. ओके, सो रिमाइंडर अगेन 2 विल लेफ्ट. सो हम ये देख रहे हैं कि 1 8 1 8 1 8 दिस विल रिपीट. दिस मीन्स व्हाट, this means what, 2 upon 11 can be written as what, 0.1818 like that, or you can write 2 upon 11 as 0.18 bar, है ना. दिस मीन्स वॉट, ये बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑल द डिजिट्स दैट आर कमिंग अंडर दिस बार इज रिपीटिंग, मतलब 1818 ये सब रिपीट कर रहा है. ओके, दिस मीन्स देयरफॉर वी कैन से दैट 2 upon 11 हैज़ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, 2 upon 11 हैज़ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग and repeating type, non-terminating and repeating type. Is that clear? I hope आपको ये clear हो गया होगा. Now we move on to our last question, last sum. Okay, so here what is given, 329 divided by 400. So what we will do, again we will perform long division. Okay, हम long division करेंगे कैसे, चलिए देखते हैं. We will divide 329 by 400, but we know that here 329 is less than 400, so we will put decimal over here, है ना, we will put decimal, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. Now we know that if you multiply 400 by 8, if you multiply 400 by 8, है ना, then you will get what, 3200. You will get what, 3200. So if you subtract 3200 with 3290, what you will get, you will get 90. Okay, now we have already put a decimal sign over here. Okay, हम decimal यहाँ पे लगा चुके हैं. This means what, you can put 1 0, आप यहाँ पे 1 0 अप्लाई कर सकते हो. Now we know that 402s are what, 800. Okay, so if you subtract 800 from 900, you will get what, 100 left. आपके पास 100 बचेगा. Now since 100 is less than 400, 100 क्योंकि 400 से छोटा है, so we will put 1 0 over here. Okay, so it will become what, 1000. This means we are now dividing we are now dividing 1000 by 400. Okay, अब क्या आ जाएगा, 400 if you divide 1000 by 400, it will not be completely divided. Okay, वो completely divide तो हो नहीं सकता है. अब हम क्या करेंगे, 400 2s are again what, we will get 800, है ना.
क्योंकि अगर हम 400 3 जार करेंगे सो वो 1200 हो जाएगा, और 1200 तो 1000 से बड़ा हो जाएगा. सो दैट्स व्हाट वी आर परफॉर्मिंग. 400 2 जार, 400 2 जार विल बी व्हाट 800. सो दिस विल बी व्हाट, this will become 200. So now this means our remainder is now what 200. Okay, now again 200 is less than 400. 200 जो है वो 400 से छोटा है. So we will put a 0 over here. Okay, हम 0 अप्लाई करेंगे यहाँ पे. One single 0 we can apply. Now if you multiply 400 with 5, okay, so 400 5s are what 2000. Okay, 400 5s are 2000, so you will get 0. Okay, this means हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 0. So we can't further divide, हम आगे further divide नहीं कर सकते. This means what, therefore we can write 329 upon 400 as what 0.8225. हम ऐसा लिख सकते हैं. Therefore you can say that 329 upon 400 has decimal representation of terminating type. I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा, कैलकुलेशन क्लियर हो गई होगी. सो दिस कंप्लीट्स द लास्ट पार्ट ऑफ योर question number 1 of exercise 1.3. In next video we will move on to question number 2 of exercise 1.3. Thank you.